G20 is right here and India is totally prepared to host it. लेकिन क्या आपको G20 के बारे में सब पता है? Well, watch this video till the end to know the details. And also end में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया इस समिट में क्या यूनिक कर रहा है। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 एक प्रीमियम फोरम है जिसके मेंबर्स ये 19 कंट्रीज हैं, प्लस 20th being यूरोपियन यूनियन। These 19 members are split into 5 groups with up to 4 countries each. India is with Russia, South Africa, Turkey in group 2. G20 का मेन पर्पस है टू मीट एंड कोऑर्डिनेट ऑन गोल्स दैट दीज कंट्रीज शेयर इन कॉमन, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सो ऑन. Also to add here, this group contributes 85% of the global GDP and around 75% of the world trade. अब समझते हैं कि G20 फॉर्म कैसे हुआ था. Well, it was formed back in 1999 after the Asian financial crisis for finance ministers and central bank governors to meet and discuss global economic and financial issues. For the very first time, the group of 20 met at leaders level in November 2008 at Washington DC at the peak of the global financial crisis. अब हर साल G20 की प्रेसिडेंसी चेंज होती है एंड एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसी प्रीवियस एंड नेक्स्ट कंट्रीज के साथ काम करती है और इस ग्रुप को टर्म किया गया है ट्रॉयका. इंडिया से पहले ये प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी एंड नेक्स्ट टू फॉलो विल बी ब्राजील. इंडिया को ये प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 में मिली थी एंड वी हैव इट टिल 30th नवंबर 2023. ऑल्सो क्या आपको पता है कि G20 की हिस्ट्री में इंडिया पहली साउथ एशियन कंट्री है टू होस्ट. अब इस समिट के एजेंडा एंड प्रायोरिटी को सेट करने के लिए देयर आर 2 मेन ट्रैक्स, finance track and Sherpa track. The finance track includes G20 finance ministers and central bank governors meeting 4 times annually through the summit. They discuss economic risks, financial inclusion, monetary policies and financial regulations. And the Sherpa track, जो कि 2008 में फॉर्म हुआ था, comprises representatives of the heads of states and focuses on socio-economic issues such as education, agriculture, anti-corruption, climate and digital economy. अब अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो लेट्स डिस्क्लोज कि इंडिया क्या यूनिक करने वाला है. वेल, वर्ल्ड लीडर्स को AI जनरेटेड एवेटार्स वेलकम करेंगे, रिफ्लेक्टिंग आवर टेक सेवी एरा. इंडिया इज आल्सो प्रिपेयर्ड टू शोकेस द UPI वॉलेट टेक्नोलॉजी टू फॉरेन डेलीगेट्स. Additionally, a G20 India mobile app has been launched for a seamless experience. हम तो G20 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. What about you? हमें कमेंट्स में बताइए. And don't forget to subscribe to our channel for more interesting information. See you soon.